Good morning, everyone. Today we are starting with chapter number 6, Programming with Scratch. So, first of all, you have to understand what is Scratch. Scratch is a free block based visual programming language. Block based means you don't have to type the code to perform any action in the Scratch. You can just drag, select the block which you want to use, and then drag it on your screen on your in your coding area, and then it will perform the action for you. So it is free of cost, available on the internet also. You need not to pay anything to download and use the software. So it is free of cost, available, and it is block based programming, where you can create your own interactive stories, games, and animation. So, using the Scratch, you can also create anything of your choice. You can create interactive stories, you can create animations, and you can create your own games also. For example, I'll show you using this link. These are the projects which the students have made online. Irrespective of they belongs to which country, they belongs to India or they belongs to UK or US or any other country, they can create projects on this site, scratchmit.edu. With Scratch, you can make your own stories, games, and animations. Let's start by grabbing a move block. We can click the block to run it. There are many other blocks to choose from. Check out the different categories. Let's Right, so by just simply dragging and dropping the blocks into the code area, you can create anything using Scratch. Now, next is it is developed by MIT Media Lab, and the offline version is also available on the website. This is a link. If you wanted to download Scratch, you can download it using this link. I'll show you from where to download. Even mobile users can also download Scratch. I will provide you the link in your class group for mobile users also. So if you are having Windows, any type of Windows, you can click on this operating system, choose an operating system that is Windows, and then go down. Now click on direct download and you can download Scratch and install it in your computer then, right? And for mobile users also, I'm sharing a link in your class group. You can download Scratch X Boot, because it is also having sprites same as of a computer. Okay, all the links I have shared in your class group now. Now, Scratch is also available in 50 different languages. So, if you belongs to any country or you know any language, you can use Scratch. There is no issue. It is because it is available in 50 different languages. Now, what is the mascot? Mascot is the logo. You can say हर एक सॉफ्टवेयर का हर एक एप्लीकेशन का एक लोगो होता है. Similarly, Scratch is also having a mascot, which is also called as Scratchy, and this is a cat, which is the mascot of Scratch software. ठीक है, the cat is the mascot of the Scratch software, and the name of this cat is Scratchy.
Okay, now this is how the Scratch Windows looks like. This is Scratch 3, the latest version of Scratch, and this is how it looks like. Now, what are the different parts of the screen? This area is called as stage. Stage means whatever the drawings you will make if you are creating an animation scene, or if you are creating a painting, or if you are creating a story, narrating a story, then everything you will draw on this area. ठीक है, so this is called as stage. Now from here you can select the background, different types of backgrounds you can select from this uh, circle, and this is for choosing a sprite. Sprite means what? Sprite means the objects which will come on your stage, using which you can give some animations to the object. So this is called as sprite. Sprite means, फॉर एग्जाम्पल आपको एक बॉय खड़ा करना है, उसके साथ एक कैट चाहिए, उसके साथ एक डॉग चाहिए. सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज sprite in Scratch. Next is the green flag and the red flag. If you wanted to play the scene which you have created, you can press on the green flag, and you wanted to stop, then you can click on this red flag. This is called as the menu bar, from where you can select the menus. And this area, this dotted area, is called script area. Here you will be dragging all your blocks to do anything in the Scratch. These are the blocks, these are different types of blocks available, and these are the blocks palette. आपको motion करवाना है, आपको उसका color change करना है, आपको कुछ sound effect देने हैं, or if you wanted to ask some questions, if you wanted to declare some variables. So these are the different types of block palettes which are available here in Scratch. Okay, so this is the main important parts of the screen which we will be using in this chapter. Next is the terms used in Scratch. Now, there are few words which we will be using in Scratch, and you should be aware of those words. First word is sprite. Sprite means the characters or the objects which we will display on the screen. It could be a cat, it could be a spaceship, it could be a girl or a boy or a toy, anything. So all the objects or the characters which you will place in your video, which you will place in your animated story, that object or that character is called as sprite. Next is backdrop. Backdrop means the background color of your stage, the appearance of your background, stage background, that is called as backdrop. Next is stage. Stage means the area where the actual actions takes place. जहाँ पर आप story narrate कर रहे हो, that area is called as stage. Blocks is, it is used to create the code in Scratch by simply dragging it into the script area. तो blocks हमारे पास already pre-built codes होते हैं जिनको हम script area पे लेके आते हैं, and then accordingly our animation or our scene will start working. Script क्या होता है? When you will join many blocks together, it becomes a script. तो वो पूरे बहुत सारे ब्लॉक्स कंबाइन होके क्या बन जाता है? स्क्रिप्ट. जो कि क्या करता है? जो कि आपकी स्प्राइट को बताता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. सो इट टेल्स योर स्प्राइट व्हाट टू डू. ब्लॉक पैलेट क्या होता है? दिस इज अ एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन सेलेक्ट द ब्लॉक्स एंड ड्रैग इट इनटू योर स्क्रिप्ट एरिया. तो ये वाले एरिया से बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारे को करवाना क्या है. हमें मोशन करवाना है, हमें ड्रेस का कलर चेंज करवाना है, हमें कॉस्ट्यूम को ही चेंज करवा देना है, या फिर हमें कोई साउंड इफेक्ट चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन डिसाइड फ्रॉम द ब्लॉक्स पैलेट. नेक्स्ट इज categories of blocks. Now, what are the different categories of blocks? First category is motion. Like if you wanted to move your sprite, or if you wanted your sprite to be turned, or you wanted to set a position for your sprite, all these things can be done with the help of motion block. Looks, if you want your sprite to think or to say or to hide or show or switch the costume or change the color of dress, so if all these things you wanted to do, you can use looks block. Sound block is used to play some sound effects with your sprites. You can also change, increase or decrease the volume of the sound. Next is events. Events means
if you want a action to be performed, if you will press, if the user will press a key from the keyboard, or if the user will move the mouse on the screen, if you want at that time, अगर आप चाहते हो कि L जब प्रेस हो कीबोर्ड से तो उस टाइम पे कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और if the user will move the mouse on the screen, then an action should be performed. So that can be, this type of code can be chosen from events block. Next is control. Controls means you wanted to do set some conditions. For example, I want if the sprite will move, एक sprite है जो move कर रहा है, and if it will reach to the end of the stage, at that time it should turn back. तो ये एक कंडीशन है कि जब एंड ऑफ द स्टेज आ जाएगा तो उसको टर्न बैक करना है. तो दीज, इफ यू वांटेड टू यूज सम ब्लॉक्स लाइक दिस, जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे मूवमेंट होती है जिनमें, तो दिस कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कंट्रोल्स ब्लॉक. Sensing means if you wanted to, or if you, it is used in respond to games or animation. आपको sensing मतलब आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में कुछ करवाना है, लाइक इफ आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस एंड देन यू विल बी रिप्लाइंग, so that can be chosen from a sensing block. Operators means if you wanted to perform some mathematical calculations, like you are creating a scene of a teacher and a student and a classroom, in which teacher is asking something from the student and then student is replying, and they are also performing some calculations, maths में plus minus multiplication कुछ solve हो रहा है. So that means, it means you have to use the operators. And variables, what are variables? Variables are the placeholders, or you can say it works like a container where you can store some values. ठीक है. तो जब हम कोई भी ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस का ऑपरेटर मैंने यूज किया, तो उसके लिए मुझे टू वैल्यूज चाहिए, ए और बी. तो अब ए और बी को हमें कुछ वैल्यू देने के लिए हम डिक्लेयर करेंगे ए एंड बी एज अ वेरिएबल. ठीक है. Okay, now what is data and variable, that we will understand later. So I hope it is clear to everyone what is Scratch. Now, what are the advantages of using Scratch? What are the advantages of using Scratch? Scratch is first of all free to download from the internet. You don't have to pay anything. You can download it on any type of operating system. This is the biggest advantage. आप उसको फोन में भी यूज कर सकते हो, आप उसको विंडोज में भी यूज कर सकते हो. If you are having Linux window, you can use it. If you are having an Apple computer, you can use it. There is no such issue. So it is available for all types of operating system. Next is, creating a program in Scratch does not require any type of typing. तो आपको टाइपिंग में बहुत अच्छा आप नहीं हो तो it doesn't matter at all, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइपिंग करनी ही नहीं है. You just have to drag and drop the blocks on the screen and your program will be created. By working on Scratch project, students can learn, select and manage multiple forms of media. So here, if you are creating a scene, then you can add a text in that scene, you can add an image, you can add animation, you can add sound effects. So all these things can be used on a single platform. ठीक है. क्रिएटिंग अ स्क्रैच प्रोजेक्ट रिक्वायर्स थिंकिंग ऑफ एन आइडिया. जब आपको मैं बोलूंगी कि क्रिएट अ एनिमेटेड सीन और अ पिक्चर और अ स्टोरी, नरेट अ स्टोरी, देन यू विल डेफिनेटली think about the topic. You will figure out what you require, how to solve a problem, and how to implement it in Scratch using the blocks provided. ठीक है. तो it will definitely help you to boost up your thinking skills also. Now let us understand how to open Scratch. We have already seen the different parts of the Scratch window. Now let's understand how to open Scratch. You will, after downloading, you will go to the Start button, then go to All Programs, and then go to, okay, then this type of icon will appear, Scratch tree. You can directly click on that icon and Scratch will open in front of you. Till the time it is opening,
Sprite, what is sprite? This I have already explained you. All the characters or objects which you will be placing on your screen is called as sprite. Now, if you are selecting any of the sprite, these four buttons are available with you. What are the meanings of these four buttons? First is search button. This button is called as search button. From here, you can search the name of any of the sprites. Second is paint brush button, using which create a blank sprite with the empty costume. आप एक empty sprite मतलब blank sprite कर सकते हो with no costume, मतलब उसके color effects नहीं होंगे. सरप्राइज बटन क्रिएट्स अ रैंडम स्प्राइट, तो आपके लिए कोई भी एक स्प्राइट आ जाएगी स्टेज पे, so it creates a random sprite. And last one is the upload button, which allow one to upload a sprite from your computer. तो आप अपनी खुद की स्प्राइट, अपने खुद के फेस की स्प्राइट बना के भी अपलोड कर सकते हो यूजिंग दिस बटन, दैट इज अपलोड. ठीक है. बैकड्रॉप. Backdrop जब आप select करते हो, then again you will get all the four buttons. The use is same. You can again use any type of upload, any type of background. This is a magical मतलब आपको random कोई भी आपको background जो available होगा आपके कंप्यूटर में वो आपको display करवा देगा. इससे blank background आ जाएगा, using which you can change the color of the background, and from here you can choose the backgrounds which are available in Scratch. Next is now understanding the stage. Let's open, I think the Scratch is open now. So this is the stage area from where you can open any type of, where you can insert, where you can create any type of scene. And this is a background. So I am choosing a background which is available already in this. So let's say I am creating a Jurassic Park scene, and the cat is not required here. So I need to delete this sprite. ये बाय डिफॉल्ट स्प्राइट होती है, कैट जो होती है, स्क्रैची जो होती है, वो बाय डिफॉल्ट स्प्राइट होती है जो हमेशा आपकी स्क्रीन पे इनिशियली जब आप ओपन करते हो स्क्रैच को, तो ये डिफॉल्ट स्प्राइट आती है. अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यू कैन डिलीट दैट स्प्राइट एंड यू कैन ऐड अ न्यू स्प्राइट ऑफ योर चॉइस. तो फ्रॉम हियर यू कैन ऐड अ स्प्राइट नाउ. आई विल बी चूजिंग अ ड्रैगन. Okay, so I am choosing this one and place it on your screen. Okay, now now what exactly the stage looks like, and what are the, you can say, what are the orient coordinates of your stage. Coordinates, जब हम स्टेज की बात करते हैं तो एक सेंटर में एक पॉइंट होता है हमेशा स्टेज के, दैट इज कॉल्ड एज 0 0, जिसमें एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है. तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं. एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी स्क्रीन. इवन इफ आई टॉक अबाउट माय कंप्यूटर स्क्रीन, इसमें भी एक्स और वाई होते हैं. ठीक है. अब नाउ व्हाट इज एक्स और वाई? जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है ना, दैट इज एक्स 0 एंड वाई 0. जब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई 0 ही रहता है. वाई क्योंकि टॉप एंड बॉटम को बोलते हैं, और एक्स हम लेफ्ट और राइट को बोलते हैं. तो एक्स यहाँ पर हमारा पॉजिटिव हो जाता है और राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नेगेटिव हो जाता है. सिमिलरली वाई टॉप पे पॉजिटिव होता है एंड बॉटम में नेगेटिव होता है. तो यहाँ पे अभी देखो जो मैंने आप स्प्राइट जो प्लेस करी है स्टेज पे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -50. एक्स जो है वो -57 है एंड वाई इज ऑल्सो -63. एक्स माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सेंटर था और हमने स्प्राइट को उससे पीछे प्लेस किया है. अगर मैं आगे लेके जाती तो वो पॉजिटिव होता, तो ये +95 हो गया. अगर इसको पीछे लेके जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, देखो -108 हो गया. ठीक है. सिमिलरली अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये y पॉजिटिव हो जाएगा, y 88 हो गया. नीचे लेके आओगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, y -78 हो गया.
So this is the position using X and Y coordinates of the screen. You can place anything on your stage. ठीक है. Next is writing the sprite. How can we write the sprite now? Okay. So let's say मुझे अभी now this is your first question in which what you have to do is you just have to change the color of the sprite. ठीक है, तो what I want is ये ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास जहाँ से ब्लॉक पैलेट है फ्रॉम वेयर वी विल सेलेक्ट. सबसे पहले हम जाते हैं इवेंट्स ब्लॉक में एंड वी विल ऑलवेज सिलेक्ट व्हेन फ्लैग विल बी क्लिक्ड. फ्लैग का मतलब है जब गो का बटन प्रेस होगा. दिस इज अ बटन ऑफ गो एंड दिस इज अ बटन ऑफ स्टॉप. तो जब गो का बटन प्रेस होगा तो क्या करना है, सबसे पहले इसका कॉस्ट्यूम चेंज कर देते हैं ड्रैगन का. तो कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए वी विल गो टू लुक्स and we will use switch costume. Switch costume to B कर देते हैं. Switch costume to B and color भी change करते हैं. Change color by 25. ठीक है. And then next costume. And then again change color by 25. अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एक पॉज आना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कॉस्ट्यूम चेंज हुआ है. ठीक है. सो फिर पॉज के लिए हम जाएंगे कंट्रोल्स ब्लॉक में और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है वेट. तो यहाँ पर हम बीच में लगा देते हैं इन दोनों के बीच में वेट फॉर 1 सेकेंड एंड देन गो टू द नेक्स्ट कॉस्ट्यूम देन चेंज द कलर. अगेन आई विल यूज वेट ब्लॉक. Again go to the next costume and then again change the color. So this section will be performed 3 times. फर्स्ट कॉस्ट्यूम आएगा, उसके बाद उसका कलर चेंज होगा, फिर वेट करेंगे 1 सेकेंड का, फिर नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आएगा, कलर भी चेंज होगा, फिर से वेट करेंगे 1 सेकेंड का, अगेन नेक्स्ट कॉस्ट्यूम आएगा, उसका कलर चेंज होगा एंड देन अगेन वी विल वेट फॉर अ सेकेंड. Okay, so I am doing only this much for the first program and let's check it now. Let's play. So colors are also changing and the positions of the dragon is also changing. Position means costume. Costume भी change हो रहा है और color भी change हो रहा है. ठीक है. In the same way, you can again use the same thing. Next costume, change color. And then wait. Now after dragging and dropping all the blocks, this makes जब हमने one by one सारे blocks हम अपने ये स्क्रिप्ट एरिया होता है, जब हम स्क्रिप्ट एरिया पे लेकर आएंगे एंड देन वी विल जॉइन ऑल द ब्लॉक्स टुगेदर, तो इट मेक्स अ स्क्रिप्ट. ये पूरी क्या बन जाती है, स्क्रिप्ट बन जाती है. नाउ लेट्स प्ले इट अगेन. ठीक है. सो दिस इज how it behaves. So the same question you have to do as a homework now. I'm going to end this session here.